Okay, so hello everyone. Welcome to another session. Sorry for the delay. A little bit of, so I was actually caught in a session and never mind, but we'll cover up all the things as far as today's topic is concerned. Okay, and so without wasting any further time, so we'll just get to the topic. So what's the topic all is going to all about? And I've been getting all these questions and queries about this particular topic for a very long time now. And so today, as you must have seen in the title itself, that today's topic is perspective. एंड काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं पर्सपेक्टिव में कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कौन सा पर्सपेक्टिव चूज करना चाहिए, कौन सी चीज़ें कैसे पर्सपेक्टिव में ड्रॉ होती हैं, किस तरह से एंगल्स काम करते हैं, क्या चीज़ करते हैं. तो बेसिकली ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 3 टाइम्स ऑफ पर्सपेक्टिव, और मैंने पिछले सेशन में मैंने कवर किया था, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा कि पर्सपेक्टिव क्या है. लेकिन आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम पर्सपेक्टिव को कैसे यूज करते हैं. हाउ डू वी यूज पर्सपेक्टिव टू ड्रॉ समथिंग. So it could be composition, could be object drawing, could be human figures, could be indoor drawing, environmental drawing, anything you want to draw. It's about how you choose that perspective. Okay, so it's not going to be more about what is perspective, because there are countless number of videos on YouTube and there are articles written over there. So I need not repeat that same boring stuff. But instead, I'll teach you today how to use the perspective in order to draw something, and what are the things you need to keep in mind while choosing a particular perspective. Okay, तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्सपेक्टिव के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा बिल्कुल, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं बात करूंगा. हम इसको एज ए ड्राइंग पर्सपेक्टिव से हम इसमें बात करेंगे. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं पर्सपेक्टिव के बारे में और आगे ड्राइंग के थ्रू मैं आपको और भी चीज़ बताऊं, कि हम ड्राइंग के थ्रू हम आपको डेमो करके दिखाऊं, पहले हम समझते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है. ये जानना बहुत ज़रूरी है. एंड देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑन पर्सपेक्टिव, और सबसे सिंपल जो डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ, एंड आई थिंक यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इज दैट अ पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट अ इल्यूजन. So it creates an illusion of distance and depth. Okay, and distance and depth and space. In fact, distance and depth एक ही चीज हो गई, तो पहले हम बोल सकते हैं कि distance and space on a 2D surface. तो 2D surface मतलब क्या है in terms of drawing. अगर हम पर्सपेक्टिव, हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं, मैं अभी एक रियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, कि जब हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपका 2D सरफेस मतलब है कि आपका ड्राइंग सरफेस है, जो हम पेपर या आपका स्केच बुक हो सकता है, उसमें हम किसी चीज को ड्रॉ करना है, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, दैट यू हैव टू शो इन 3D. सो हाउ in that context, perspective is the tool or medium or concept which we use to draw something in 3D on a 2D surface. So बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और इसमें पर्सपेक्टिव कैसे रोल प्ले करता है एक 2D सरफेस पे एक 3D व्यू दिखाना, वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे. ठीक है, सो आज हम वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू नहीं करेंगे. आई होप यू हैव बीन डूइंग दिस वार्म अप एक्सरसाइज फॉर नाउ. जो मैं पहले सेशन अराउंड 3 वीक्स या 4 वीक्स पहले लिया था, उसमें मैंने बताया था कि आपका डेली एक्सरसाइज है. तो अभी हम, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा शॉर्टेज है, तो उसमें हम उस पर फोकस करेंगे, सीधा हम अपने टॉपिक पे चलेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. Okay, so by the way, you can actually throw your questions onto a chat box also. In the meanwhile, I'll start looking at your questions in the during the demo, and also I'll try to answer them as much as possible, and try to clear your concepts down. Okay, okay. So I hope you can see my drawing board here. So I have a couple of sheets here, and I'll grab my pencil and we'll begin. Okay, so as I mentioned that perspective is an illusion, and we use it to show 3D view on a 2D surface. Okay, अब आज इसमें ये भी हम बात करेंगे कि कैसे एक हॉराइजन लाइन, आई एम श्योर कि जब मैंने पिछले सेशन में हॉराइजन लाइन और कोनो विजन की मैंने बात की थी, लॉट ऑफ यू स्टिल कंफ्यूज्ड कि हॉराइजन लाइन कैसे काम करता है, एंड हाउ डू वी यूज द horizon line, how do we move it, and how does it like affect the drawing itself.
तो मैंने पिछले सेशन में एक जो बात की थी उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, जो मैंने हॉराइजन लाइन को लेके बोला था। जब मैंने एरियल व्यू, फ्रॉग आई व्यू और एंड्स या एंड्स आई व्यू या आई लेवल की बात की थी, तो उसमें ये चीज होता है। मैंने एक बात कहा था कि एरियल व्यू में हॉराइजन लाइन जो है बिलो आई लेवल होता है। दैट इज इनकरेक्ट एक्चुअली। हॉराइजन लाइन जो होता है आपके आई लेवल के ऊपर होता है। सो दैट्स द करेक्शन। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो व्हेन यू आर लुकिंग समथिंग लाइक फ्रॉम बिलो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपका हॉराइजन लाइन नीचे होता है। उसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। एंड so that was the correction that I just wanted to make, because that was creating kind of confusion as well. Okay. Now, so let's get to the drawing itself. So we know that there are three types of perspective, which I have discussed earlier also, and you must have seen also on numerous YouTube videos as well. So we know that there is 1 point perspective, there's a 2 point perspective, and we have a 3 point perspective. And there are more advanced kind of curvilinear fisheye perspective होता है, curvilinear 5 point perspective होता है। लेकिन जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बेसिक जो आपका पर्सपेक्टिव है वो दैट ऑल रिवॉल्व अराउंड दिस थ्री बेसिक पर्सपेक्टिव। ओके, सो in this, so I'm going to talk about a little bit further step about perspective. अब इसमें हम पहले एक एग्जांपल देखेंगे। जो एक बेसिक पर्सपेक्टिव जब हम बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं 1 point पर्सपेक्टिव की बात करूंगा। सो सो दिस इज माय होराइजन लाइन। ओके, सो HL, which I mentioned in the previous session, that HL stands for horizon line. And here, what we are going to do is here that whenever we draw in 1 point perspective, our tendency is to draw put a vanishing point in 1 point perspective. We are going to have one vanishing point. इसमें एक vanishing point होगा, which is denoted by a VP. We always put it in the center. Okay, so just let me highlight it here. So this is our vanishing point. So because since we are talking about 1 point perspective, there's only going to be one vanishing point here. Okay, now whatever we draw, we always draw with respect to this. So let's say for this example, we'll draw a very simple cube. We'll draw a very simple cube. And we know that, so these corners from here, the lines are converging towards this vanishing point. So let's say top surface. So suppose we are seeing this much of surface on top view. So if I just highlight it with a different color. So basically our cube is this. So this area, so I'll just cross shade it. So this is basically a cube in 1 point perspective, and normally we draw it like this. Okay. Now there is nothing wrong in it. There is nothing wrong in it. और जब हम composition draw करते हैं, हमारा tendency 1 point perspective, especially अगर हमें कोई ऐसा question दिया हुआ है कि you are sitting at a table. There's a question in fact asked in UC, I think in previous year, or I think year 2022 or 2023, not sure about it. So there's a sketching question in part B where it says that, so there was a professor, a female professor, and you had to draw a view of a table from her point of view. So वो एक प्रोफेसर था, उसके प्रोफेसर के डेस्क पे कुछ चीजें रखी हुई थी। तो एक टेंडेंसी हमारी क्या बनती है कि हमेशा हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। व्हाट वी डू इज दैट, so we draw the horizon line, we put a vanishing point, and we start drawing. Okay, so when we start drawing in it, so तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा टेबल जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेबल बनेगा, मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ होगा।
So let's say this is a leg and we are sitting somewhere, and this is a point of view which we are drawing here. Okay, so we are these lines are going towards that vanishing point in one point of perspective. तो हम इस direction में हम देख रहे हैं वो चीज को. So this is normally we'll draw because this is what we visualize and imagine. This is thing. Okay. Now there is nothing wrong in it. ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे उसमें, तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ड्रॉ करना है वो पर्सन कहाँ बैठा है. It is not mentioned in the question. So now in this, the person could be just sitting at the edge of the table here, maybe just behind the table. I don't know, maybe at a distance of 1 feet, 2 feet, or 3 feet, or 4 or 5 feet. We don't know about that. Okay. Now, why am मैं आपको information क्यों बता रहा हूँ? The reason being that if you do not want our lines to converge or our object to look very distorted. So in this case, so this looks distorted because of this convergence. Because if you see, our vanishing point is on the page. That is why we see this this convergence. But in reality, if you look at a table, अगर आप अपने रूम पे आपको टेबल होगा, चाहे स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगल शेप में हो, लेकिन अगर आप अपने टेबल को देखोगे, आपका टेबल कुछ ऐसा दिखेगा. अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूं, so in top view, my table will look like this. Now, there is a key difference when I look in the shape of this table in top view in comparison with perspective view. Now, why does this matter? Now, for example, अगर मैं इसी question को लूं, and whatever I draw on the table could be anything, books, a plate, a glass, could be any object, they all will follow this perspective. They'll all follow with this perspective. क्योंकि जैसे इसमें distortion हो रहा है, तो वो object भी कुछ वो भी distort होगा. Otherwise, what will happen is that either if you don't want that object to get distorted, then you need to have a vanishing point, a separate horizon line for that object. क्योंकि हमारा horizon line यहाँ पर है इस table का, तो maybe to create to avoid having distortion, I'll have to draw a horizon line which could be like this. I don't know, means उसके orientation से मैं draw करूंगा, तो वो हो सकता है जो object जो मेरा है, that will kind of show that object in show the object proportionally. It will not show it like distorted or warped. Okay. Now, as I said just a few moments ago, here the shape of the table is rectangle, and we know that in reality the shape of the table is in rectangle shape. But why does in our drawing this is happening? ये चीज क्यों होता है? ये क्यों हो रहा है? और हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं इस चीज को, ताकि हमारा जो ड्राइंग जो हम बनाते हैं. और रिमेंबर गाइज दैट इन एग्जाम जो भी आपको ड्राइंग स्केचिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द like what you will see in real world. It is not something which is hypothetical. जो आपको भी जो भी सिचुएशन आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, वो एक रियल वर्ड से ही रिलेटेड होता है. सो यू बेसिकली यू आर जस्ट ड्रॉइंग, यू हैव टू ड्रॉ समथिंग विच वी ऑब्जर्व डेली और इन like in real life. Okay, so this is very, very important. So now, so I'll explain to you how we can avoid this, having this distortion. And yes, there's one thing, but there is a catch to it. Having said that, because should not converge too much like this, इतना converge नहीं होना चाहिए. लेकिन आप जब पर्सपेक्टिव में चाहे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हो या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हो या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप ड्रॉ करते हो, लेकिन एक कुछ ना कुछ वो कन्वर्जेंस जरूर होगा. That there has to be some convergence. It cannot be exactly this parallel. इतना parallel होगा ही नहीं वो. Until unless you are looking in a lateral view, so which is called a orthographic view, then only this will happen. Okay, but in perspective we don't draw in lateral view. Okay, now so there are few concepts you need to understand. आप ये concept apply कर सकते हो कुछ भी draw करने के लिए. Someone has asked that कि
how to show horizon line as well as human figures eye levels is like eye level above from horizon. Okay, so Samyak, so horizon line, it doesn't have to be always above eye level. It depends upon in which perspective you want to show something. That is exactly the objective of today's session. So just, just follow the session along and you'll be able to figure it out. What happens that when we draw something, how does it affect our view? And as complex objects or drawing as human figures, today, so I'm going to use only some basic things, objects, but that is applicable to whatever complex object you draw. Okay, so that is the concept you need to understand. आप ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना चाहते हो या कॉम्पोजिशन ड्रॉ करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हो, वो सब ये चीजों में एप्लीकेबल होता है. ओके, नाउ so what do we need to do in order to so that there is no convergence like this? So what we need to do is that, so if suppose, so I'll draw a frame. Now let's imagine, so let's imagine this is a drawing frame. हमें एक drawing space मिला हुआ है और इसके अंदर हमें draw करना है उस चीज में. Irrespective of whether we draw in 1 point perspective or 2 point perspective, that doesn't matter as of now. It is important that, okay, how do we like avoid having so much convergence? Okay, the first thing, there are two things. If you're struggling to draw perspective and you always need a help of having horizon line on the frame, so what you can do, you can have that horizon line on your drawing. So let's draw this horizon line. So this is our horizon line. Okay. Now we need to place a vanishing point on this horizon line somewhere. So for this example, let's place a horizon line here in the center. Okay. As we are trying to avoid this convergence. So here, before we draw something, how to avoid that convergence? So what we are going to do is, first we need to understand why this convergence is happening. ये क्यों होता है? अगर आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, बैक एंड जो है, just highlight it with the red pen. This one, this is very close to the horizon line. Okay, and if you look at this front portion, this front edge, this is quite far. अगर आप distance आप measure करोगे, so I'm guessing is ये जो distance है, okay, so visually मैं guess कर रहा हूँ, it is about half. So if I measure this distance is coming almost half. Meaning that distance between this edge and this edge, so this distance is almost twice. Okay. Now, and in reality, when we draw in perspective, the things which are very closer to the horizon line, they start shrinking, they start converging. वो converge होने लगता है. Okay, so that is why you see this lot of convergence. So, in order to avoid this convergence, we need to take this object in this cube further away from the horizon line. So we need to move this object further away from the horizon line so that we don't have this convergence here. Okay. अब इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट को, तो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, एक एग्जांपल दिखाया था, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट सेम एग्जांपल अगेन. ओके, सो if you see this sharpener, so you're looking from the top view camera. Now you can imagine this sharpener to be in with respect to this drawing. Okay, now it is at a distance. Now, because you're looking straight, क्योंकि आप top view दिख रहे हो तो उसको आपको इतना convergence नहीं दिखेगा, because it is right, the camera is right on top, so you're looking in an orthographic view. But still, so what I'll do is now, in order to
avoid that convergence, you can imagine that the edges of this vertical edges of this sharpener, they're converging to a vanishing point on the horizon line, which is behind this object. Okay, so just imagine कि वो converge कर रहे हैं, just imagine. लेकिन आपको इसमें convergence दिखेगा नहीं, imagine क्यों करेंगे, क्योंकि आप top view देख रहे हो इसलिए, ठीक है. तो जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था कि हमें convergence avoid करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, we need to, as I said, we need to move the object near to the viewer. So what we need to do is that we need to move this object near to the viewer. Now, so when I move too near to the viewer, then I'll explain the next point. So what I'll do is that अब मैं धीरे धीरे इस शार्पनर को मैं कैमरे की तरफ तरफ लेके आऊंगा. आप ये विजुअलाइज करना कि आप उस कैमरा के थ्रू आप देख रहे हो तो ये आपके आंखों के नजदीक आ रहा है, ठीक है. सो इफ आई मूव द शार्पनर as close, like near to the camera as well. So what will happen is you just focus on the sharpener. Okay, forget about the background as of now. So I'll just move away my hand. So as I start moving towards what, at one point of time, it starts looking a bit blurred. Okay, right? Starts looking a bit blurred. Okay. Now, again, as I move further away, what you see, another observation if you see is that object seems to start, decreasing in size. Now, the point which I was saying that as the things which are nearer to the horizon line, they start receding. इसको technical term में foreshortening बोलते हैं. But this thing is called foreshortening. So as I'm moving away from the camera, from your view, you see the sharpness starts getting smaller and smaller. The reason being that it is going towards the horizon line. Okay. As I bring this sharpener again upwards, you see the size starts decreasing. So starts increasing, sorry. So basically क्या हो रहा है, ये object real life में इसका size increase नहीं हो रहा है. It is your view, it is your point of view. That is the image which you're seeing through this camera. That is creating an illusion because of the perspective. क्योंकि ये आप ये ऑब्जेक्ट आप 3D में देख रहे हो, इसलिए उस वजह से ये आपको, अगर मैं और नजर आप देखो कितना बड़ा हो गया कि आपका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ब्लर्ड हो गया है, हिडन हो गया है ये चीज को. तो ये चीज रियलिटी 3D में ये चीज हो रही है, ठीक है. अब इसी में सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. व्हेन वी लुक एट समथिंग विच इज इमूवेबल, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो इमूवेबल है, दिस थिंग ऑल्सो इज गोइंग टू हैपन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट अ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग के पास जाते हो या कार खड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हेवी ऑब्जेक्ट है जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ इट्स अ बिल्डिंग. आप बिल्डिंग जितना आप नजदीक जाते जाओगे वो स्केल अप होते जाएगा, क्योंकि आपका जो मैंने पिछले सेशन में बोला था कोन ऑफ विजन, आपका कोन ऑफ विजन मतलब और छोटा होता जाएगा. जैसे आप ऑब्जेक्ट के नजदीक जाओगे तो उसमें क्या होगा, आप वो ऑब्जेक्ट को पूरा दिखेगा नहीं, आपको कुछ ही पोर्शन दिखेगा आपको ना. उसको ऑपोजिट करते हैं, अवे from a building, and at one point of time you will see the whole building. तो ये चीज क्यों क्रिएट हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ दैट, जैसे मैंने शुरू में कहा था डेफिनेशन में, इट इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड स्पेस. उस वजह से हो रहा है. इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन रियल लाइफ, तो आप ऑब्जर्वेशंस और मेमोरी से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. So the thing just I explained in last 10 minutes, it is very important to understand if you want to draw something from memory. Okay. So now, so take an example of sharpener. जैसे मैंने कहा था कि इसको हम मूव करते हैं towards the viewer and away from the viewer. Now, how do we know? How do we know that what is the correct distance from the camera? So when we are drawing something, आपको 2D सरफेस में ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ये डिसाइड करें कि कौन सा डिस्टेंस बिल्कुल सही रहेगा इसको ड्रॉ करने के लिए, जहां पर मुझे डिस्टॉर्शन नहीं होगा. अब ये चीज जो है, इसके लिए कोई टेम्पलेट या रूल बुक नहीं है या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, नाउ हियर इन टर्म्स ऑफ ड्रॉइंग आप ये चीज कर सकते हैं. सो व्हाट वील डू इज दैट इन वन, सो वी आर गोइंग टू डू वन पॉइंट पर्सपेक्टिव. और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है,
ये वाली लाइन जो मैं ब्लू कलर पेंसिल से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये हमेशा हॉराइजन लाइन के पैरेलल होता है. सो दीज लाइंस, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल टू द हॉराइजन लाइन. This is very, very important. And I see a lot of students making this very common mistake where they don't put this horizontal line parallel to the horizon line and automatically वो perspective गलत हो जाता है. So you have to always remember कि आप कुछ भी draw कर रहे हो, आप हमेशा जो horizon line, जो horizontal line है, वो हमेशा horizon line के parallel रहेगा, only in one point perspective. This is very, very important. Okay. Now, let's replicate this cube only, but with less distortion. Okay. अब मैं ये चीज यहाँ ड्राइंग में, अब ये तो 2D सरफेस हो गया, अब इसमें मैं कैसे दिखाऊंगा ये चीज में. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. व्हाट आई नीड टू डू इज दैट फिजिकली मैं इस चीज को, हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट को तो मूव नहीं कर सकता, but I'll draw something in a way where it appears that this horizon line is way into the distance, way into the distance. For example, if you're standing in the middle of the road and you're looking way straight into the distance, तो आपको एक horizon line, आपको अगर रोड के बीच में खड़ा तो रोड आपको लगेगा एक जगह पे जाके वो कन्वर्ज हो रहा है, ऐसे जाके कन्वर्ज कहीं पे मीट, ये कहीं मीट हो रहा है, ये बहुत डिस्टेंस में होता है, बहुत डेप्थ में होता है. वही डेप्थ आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, जो जो पर्सपेक्टिव के थ्रू हम करते हैं. ओके, अब इसके लिए ट्रिक क्या होता है. तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल नॉट ड्रॉ दीज लाइंस फर्स्ट. जो लाइंस कन्वर्ज हो रही है इसको पहले मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, पहले मैं ड्रॉ करूंगा जो मेरी ये जो लाइन है जो पैरेलल होनी चाहिए होराइजन लाइन को, इसको मैं पहले ड्रॉ करूंगा. ओके, नाउ सो व्हाट आई विल डू इज दैट, सो लेट्स डू वन थिंग. सो आई विल टेक दिस टॉप सरफेस. अभी मैं क्या करूंगा, इस टॉप सरफेस को क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा होराइजन लाइन के ऊपर रखूंगा. ओके, सो लेट्स डू दिस, so let's do one thing like this. Okay, so this is this edge and this is this edge. So if I take these lines here, if I just recede it back in the background, so they're receding back towards this vanishing point. So here, so now I don't see any convergence because that convergence is being hidden by this box. Okay, so here my cube looks proportional. Now this, as someone had asked that at eye level, so this box is at eye level. How you can make out, क्योंकि मुझे यहाँ पर टॉप सरफेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब इसी चीज को आप बोलोगे ठीक है सर मुझे टॉप सरफेस दिखाना है, तो अब यही ड्राइंग में मैं कैसे करूँ वो चीज को. ठीक है, सो हियर इसको हम दूसरी ड्राइंग बनाते हैं. सो अगेन आई विल टेक होराइजन लाइन हियर. Okay, so what I'll do now is this. We'll take this vanishing point here. अब जैसे मैंने शार्पनर के एग्जांपल में बताया था कि हमें एक डिस्टेंस हमें देखना है, एक डिस्टेंस हमें देखना है क्योंकि हमें एक कन्वर्ज नहीं करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ टॉप सरफेस से शुरू करेंगे. ओके, सो सो लेट्स डू वन थिंग. सो आई विल ड्रॉ द दिस बैक एज फर्स्ट. एक काम करते हैं, टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बनाते हैं, टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, और एक और पैरेलल लाइन बना लेते हैं. ये नीचे क्यूब का बेस हो गया, ये बेस हो गया. अब ये कितना कन्वर्ज करना है, अब मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितना कन्वर्ज करना है वो. ओके,
सो ये बिफोर मैं क्या करता हूँ यूजली, आप भी ये चीज कर सकते हो. सो व्हेन आई ड्रॉ समथिंग इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समथिंग, सो व्हाट आई डू बिफोर आई ड्रॉ, सो आई जस्ट फर्स्ट लाइक experiment. So if what I do experiment. So what I take my pencils, a set of pencils, okay, and so when I put my pencils as a reference. So now here, so this is the vertical edge. अब इसको हम थोड़ा एज अ टर्न करते हैं. ठीक है. सो मेक श्योर दैट these are converging towards that. Okay, now in this, ये बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है. तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर और खोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं वो चीज को. अब अगर मैं कैंसिल लूं, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पर और इसको यहाँ से करूं, सो दे आर मीटिंग समवेयर हियर. ओके. सो बट मेरा हॉराइजन लाइन तो यहाँ पर है. दे वर सपोज टू कन्वर्ज हियर, but it is going beyond that horizon line. So what do I need to do now? That means what I need to do is that I need to shift this cube, और मेरे को अपने नज़दीक लाना पड़ेगा, मुझे मुझे और अपने नज़दीक लाना पड़ेगा. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट्स से these lines are radiating from this vanishing point here. So these are uh, radiating towards the viewer. So now, in order to avoid that distortion, so here these parallel lines, they will intersect with this radiating line somewhere. Okay. So here in this case, मैंने कहा थोड़ा सा कन्वर्जेंस तो होगा ही होगा आपको, थोड़े से कन्वर्जेंस होगा ही होगा. इसमें अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि लेट्स से आई वांट टू कीप दिस वन एज माय फ्रंट्स, द बैक वन. ओके. तो बैक एज को ये कर लेते हैं, या इसको एक काम कर सकते हैं. सो okay, so what we can do, let's not move this. So what we'll do is that first let's make this line slightly correct. Okay, so let me, इसको हम straight कर लेते हैं. Okay, so let's take this edge. Okay, so here, so what I'll do is that, so let's do one thing. So I further move the cube towards me. तो आपको ये जो क्यूब है अभी आपको और ज्यादा बड़ा दिख रहा है. ओके. नाउ हियर दिस क्यूब, okay, is now further away from the horizon line. Okay. Now still we'll say that says अभी भी थोड़ा सा ये कन्वर्जेंस जा रहा है, अभी उतना कन्वर्ज कर रहा है. इसको हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं उसको. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं उसको, तो व्हाट आई विल डू इज नाउ आई विल कीप दिस होराइजन लाइन. अब इसको होराइजन लाइन को हम और शिफ्ट कर देते हैं इनटू डेप्थ. ठीक है. इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. इसमें से आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा. अभी आप डिफरेंस देखना कि डिफरेंस क्या होगा. देखो. ओके. सो लेट्स टेक अ ब्लैक पेंसिल. अब यही क्यूब जो है,
Now you see the slight difference, see the difference. Just by further pushing away the horizon line and vanishing point here from here to here, there's a huge jump in terms of convergence. So here, there's the black color one is converging less in comparison to this brown color line. Okay. Now, if I want to have more kind of uh, uh, proportional, I need to push this horizon and vanishing point way off the page. अगर मैं बिल्कुल पेज के बिल्कुल बाहर कर दूंगा तो ये और पैरेलल दिखेगा. ओके, सो अब जब पेज के बाहर हो जाता है तो मोस्ट लाइकली व्हाट यू विल सी हियर इज समथिंग लाइक दिस. So I'll just highlight it. So if I extend these lines, so they'll meet somewhere off the page. So in comparison to this cube and this cube, so this looks more natural. This looks more natural. Okay, so this is a difference. So when you do perspective, so here in drawing, आप physically तो इसको move नहीं कर सकते, तो in drawing आप क्या कर सकते हो? तो try to have this vanishing point horizon line somewhere very far away, maybe like off the page or something like that. Okay, वो धीरे धीरे practice करके आएगा. आप क्या कर सकते हो कि पहले आप सेंटर से शुरू कर सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, वेदर यू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड that doesn't matter, but I would ideally advise you to go upward. आप धीरे धीरे इस horizon line को आप पीछे पीछे आप इसको पुश करते जाना. आप जैसे पुश करते जाओगे आपको ड्राइंग का डिफरेंस पता चल जाएगा. सो व्हेन वी डू पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑफ एनीथिंग, so this is usually what we have. Okay, this is what we need to decide. So where do we need to keep the horizon line and vanishing point? So with respect to the position of the horizon line and the vanishing point, your perspective will look natural or unnatural. So this is the main concept, how to use perspective. Okay, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, आई विल शो यू द एग्जांपल. अब इसमें एक और चीज है कि अब जब पर्सपेक्टिव हम ड्रॉ करते हैं, सो व्हाट इज दैट पर्सपेक्टिव. जैसे मैंने कहा था कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पर्सपेक्टिव में कैसे हम उसको यूज करना है. So as I said, the most often students, they use this central perspective, okay, which is good for drawing interiors. अगर किसी रूम का आपको ड्रॉ करना है, अगर आप 1 पॉइंट ड्रॉ करते हो ठीक है, आप इसको अच्छा इसको आप यूज कर सकते हो. लेकिन थोड़ा सा और नेचुरल उसको दिखाने के लिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं. So we can just move that vanishing point from the center to somewhere away from the center. Okay, so let's put a vanishing point here. Okay, so and we have some radiating lines. So let's draw cube only. Okay. And remember that in 1 point perspective, the horizontal line needs to be parallel. Okay, so we'll just decide. So let's say this is the front edge. Okay, so we'll draw the first face. Okay. And make sure that these lines are parallel. And we'll extend from here. So this is receding back to the vanishing point. Okay, so all these lines. And let's say this is the thickness of the cube. And you have to make sure that these are parallel. Okay, so let's darken it a bit. So you can just highlight. So just let me sharpen my pencil. And we'll just इसको highlight करते हैं इसको.
Now, if we see the difference between, so I'll just make a drawing, just make a comparison. So when the vanishing point is at the center, with respect and in comparison to when vanishing point is off center. Okay. So here, so this is the vanishing point which is at the center, and this one is away from the center. Now you see the difference between both the cubes, even though they are same cube, but just positioning the vanishing point, you see the difference. The difference being that अब अगर मुझे इसमें चूज करना है कि कौन सा बेटर पर्सपेक्टिव है या कौन सा व्यू ज्यादा बेटर दिख रहा है, then it will be this one. It will be this. Reason being that even though they've drawn in the same perspective, but here I can see the all three surfaces of this cube: top surface, side surface, and front surface. So top surface, side surface, and front surface. So here, यहाँ क्यूब की जो फॉर्म है, 3D फॉर्म जो है, मुझे बेटर एक्सप्लेन हो रहा है. I can communicate much better in comparison to having vanishing point in the center. I can see here only top surface and here only front surface. I can't see the side surface. So here, the communication of a form which is cube, if I have to draw through if I have to show through a drawing, then I would show this kind of drawing if I'm drawing a one point perspective. And this is something which you can apply to drawing other topics as well: composition, object, human figure drawing. The ultimate purpose of perspective drawing is to show something, any object in 3D on a 2D surface. तो आप जब भी आप ड्रॉ करते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्पोजिशन जो भी है, वो 3D व्यू में दिख रहा है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो this is how you can decide how to draw in how to choose a particular perspective. Okay, and this applies to 2 point perspectives as well. Now here, in order to practice this, आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो. उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है. So what you can do is here, you can just keep practicing with cubes only. So what you do is you draw the horizon line in the center. And we'll take a vanishing point here. Okay. So what we'll do is that first we'll make something which is right at the center, which is dead straight. We are looking dead straight into the cube. तो उसमें मुझे सिर्फ एक ही सरफेस दिखेगा जो फ्रंट सरफेस दिखेगा. So here, my line of sight is exactly 90 degree to this front surface. That is why I'm only able to see one surface of the cube. So this is at eye level, okay? So this horizon line is at eye level. Now, if I have to draw even within this only, within this eye level, and I want to show this cube in 3D, or I want to show more surfaces in 3D, more surface of the cube, then I just need to rotate this cube. Okay, whether I rotate it counterclockwise or clockwise, that depends upon me. Okay, so let's do one thing. So we'll use some guidelines.
So here the height of the cube is same. So here you see that I've slightly rotated the cube. So now I see little bit of this surface. Okay. Now again, if I further it, I rotate it more. So in a clockwise direction, so most probably at certain angle, we'll start seeing more of the side surface and less of the front surface. So here you see more of side surface in comparison to this one. Okay. So basically what you're doing is that you are just changing your view. आप अपना एक यहाँ क्योंकि हम क्यूब एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं इसको, तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे कितना वो 3D दिखेगा वो चीज़। अभी तो सिर्फ मैं आई लेवल पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यही चीज़ अगर मैं बिलो आई लेवल करूँ, ओके, सो यहीं पर मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो लेट्स डू बिलो आई लेवल, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर का सरफेस दिखेगा। सो दिस इज द सेम विड्थ एंड लेट्स ड्रॉ दिस। Okay. Now again, if I rotate it like this towards this side, this height will be remain same here. Okay, so this and this. Okay. So now you start seeing this 3D surface. अब आपको साइड भी दिख रहा है। फिर जैसे इसको और हम रोटेट करेंगे इस साइड में, ये सरफेस कम होता जाएगा। ओके, टॉप सरफेस शायद उतना ही दिखेगा बिकॉज वी आर नॉट रोटेटिंग लाइक दिस, वी आर रोटेटिंग नॉट रोटेटिंग वर्टिकली, वी आर रोटेटिंग हॉरिजेंटली। So this side surface will start appearing more in width. So now with respect to drawing, this applies to everything. So when you rotate clockwise or anti-clockwise, so in reality क्या हो रहा है, हम बेसिकली एक कर्विलिनियर पर्सपेक्टिव में हम ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली। अगर मैं इसको और आगे तक ड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट पे ये ऐसा कर्वेचर बन जाएगा। इट विल अपीयर लाइक दिस। बेसिकली आप इनडायरेक्टली आप एक कर्विलिनियर पर्सपेक्टिव में आप ड्रॉ कर रहे हो। So if you see a lot of drawing, if you look at some drawings on Pinterest and some composition drawings, so this is what usually happen. They you see a lot of professional artists using this kind of curvilinear perspective to bring some dynamism. लेकिन उससे क्या होता है, उसमें अगर कोई ह्यूमन फिगर्स है तो ह्यूमन फिगर्स जो है वो बहुत डिस्टॉर्टेड या वॉप्ड हो जाता है, या उसके अगर आप एरियल व्यू में ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लेग्स जो हैं ऐसे छोटे हो जाते हैं और उसका हेड बहुत बड़ा अपीयर होता है, इट अपीयर्स वेरी बिग। Okay, that is because they're using this curvilinear perspective, but they're following the perspective rules. They're not changing the perspective rules. It is just basically they're just manipulating that perspective to their show the dynamism, show some movement in drawing and in drawing. That is, it is called like to show movement, to show dynamism, to show something, some activity is happening kind of thing. So these are a lot of professional artists. आपके आप उनका drawing देखो तो आप ये चीज use करते हैं. They don't draw in very static kind of perspective. They draw in a very dynamic perspective, but they know how to manipulate this perspective. Okay, so this is what happens. Okay, so now I'll show you some example of how we see this
एंड आज मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ये कैसे ड्राइंग में यूज होता है, और उसको आपको बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि वो चीज़ कैसे यहाँ अप्लाई हो रहा है. ओके. सो okay, so if we see here that now here, if you see here that there is this drawing in 1 point perspective. Sorry. Okay, so there's a drawing in 1 point perspective, and if you see here, there is a view of this train station. There's a view of a train station here, and this is drawn in 1 point perspective. Okay, and here the vanishing point is off center. So here vanishing point is off center. I hope you can see the drawing. So just can someone confirm on YouTube if you can see the image? Okay, so we're just waiting for some confirmation. So if you can see the image, so just kindly just confirm. Okay, so just waiting for some reply. Okay, never mind. Okay, so we'll continue. Okay, so what's happening here is that uh, so okay, so share. Okay, okay. So if you see here that here this drawing is done in 1 point perspective, and I'll just highlight it that how do I know that it's drawn in 1 point perspective? Here we can take an example. So there's a very lot of visual cue given in this drawing. That is basically a train. जो मैंने foreshortening की जब बात मैं कर रहा था. So this is basically what is happening here is that if we see these lines, so I'll draw a box around it. So let's I can increase the size. Just 1 second. Okay, so line width. Okay, fine. Okay, so okay, yeah, fine. Yeah. Okay, so here, so this vertical side. Yeah. So this is actually here, and he has used a little bit of collinear perspective, but we can ignore that for that moment. So we can just assume that this is in 1 point perspective. So if you see here, these lines are converging towards this vanishing point here in the background. कहीं depth में है वो, कहीं पर. Okay, so there is a vanishing point here. तो अगर आप देख रहे हो, क्योंकि vanishing point बहुत depth में है, you see this drawing appears big. Of all the drawing, the front of the train appears bigger here. And if you see the doors and windows, they start getting smaller and smaller, to a point where it just appears like a line. And if you see the whole height of the train, so this is also is reducing. Okay, so this is also reducing in depth. Okay, now here I'll just use another color to highlight where is the horizon line. Okay, so now you got the vanishing point here. तो हमारा horizon line जो है यहाँ पर है. ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि horizon line बिल्कुल सेंटर में इस इमेज के, and if you see these human figures, सबके head जो हैं is just below this horizon line. In fact, their head is just touching their horizon line. Now, in that case, what is happening here is this, that this height of these human figures, they appear very proportional. They look very natural. If I draw this, if we draw this person somewhere here, तो ये person का भी जो scale है वो scaled up हो जाएगी, ये जो lady है, ये चीज को. अगर आप देख रहे हैं ह्यूमन फिगर्स भी बैकग्राउंड में रिसीड कर रही है, फोर शॉर्टनिंग हो रहा है ये चीज को.
अब ये पर्सपेक्टिव बहुत डायनेमिक क्यों दिख रहा है, बहुत पर्सपेक्टिव डायनेमिक क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ जो हमारा जो वैनिशिंग पॉइंट है हमने ऑफ सेंटर कर दिया, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दिस एज ऑफ दिस ड्राइंग. So that is why it is bringing making it very dynamic perspective. ये कॉम्पोजिशन बहुत डायनेमिक दिख रहा है. अगर हम इसी को इस सेंट्रल वैनिशिंग पॉइंट यहाँ रख देते हैं, शायद ये इतना डायनेमिक नहीं लगेगा, बहुत सारी डिटेल्स हमको नहीं दिखेंगी, और हमें एक जो ट्रेन का जो 3D व्यू है वो भी हमें इतना पता नहीं चलेगा. So you see that this is that what is that happens because of that perspective. Okay. Now, अब इसी comparison में we look at other drawing. अब ये this is an true central vanishing point. Now this is an interior of a train. This is an interior of a train where you see this, that here. Okay, so here now, what is happening here is that here, if you see that here the vanishing point is right at the center, horizon line is here, and all these lines, if you see, they are receding towards this vanishing point here. You see, if this holding bar, the seats, even this edge, this edge, this edge, this edge, they're all receding towards here. But key thing here is that, again, this is a very dynamic perspective. Reason being, again, that the vanishing point has been put way into the distance, way into the distance. Okay. Now what, due to that, जैसे मैंने बताया था सेशन में, अब ये चीज जो है हमें बड़ा दिख रहा है ये, क्योंकि ये this is closer to the viewer. Okay. So this is it. So this is how you play around with the perspective. So this is what you need to understand, how to play around with the horizon and vanishing point to get that dynamic view. Okay. So this is an example, 1-point perspective. Okay. Now we look at some 2-point perspective here. So just let me increase the size of the drawing. Now here, now we can make out that this in 2-point perspective. So I'll just highlight it because this is going towards this right vanishing point here. Okay, sorry. So again, the vanishing points are way off the page, and these lines are going towards the second vanishing point here. Okay, like this. So this is going somewhere here like this. And here, this is the wall in the center. Okay, now here, because the vanishing points, as I mentioned in the session, because the way of the page, so they are basically, that's why everything, whatever is drawn here, so there's a view of the kitchen, that is, looks, very natural, doesn't look unnatural. So this is how, like showing you another example, how does it affect when you're drawing, when you understand how to play around with the perspective. Okay, so we'll look at some more examples. Okay, so here again in this 2-point perspective, view of another kitchen. Here it looks very natural again. So you see here this line. So 2-point perspective, अगर जब आप इंटीरियर कॉम्पोजिशन कर रहे हो ना, आपको ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, इसको हमेशा सेंटर में रखने की कोशिश करना है इसको. जब आप इसको सेंटर को रखोगे इस चीज को, आपको ऑटोमेटिक आपका पर्सपेक्टिव बहुत डायनामिक बन जाएगा. So you see this is lines that are going towards, so they are going towards different vanish 2-point perspective here, going like this. You can see these guidelines of the floor, जो एक टाइल्स का जो बना हुआ है, ये भी आपको एक पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा है. सारे चीज पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं. Okay, so everything is following perspective. Even these windows are following perspective. Everything. So again, that brings very natural kind of element here. Okay, and okay, so here, if you see that whole view of a building, of a hotel, which is in 2-point perspective, and here looks very proportional. तो यहाँ पर जो आपके जो sides हैं, ये वाली जो line है,
sorry. So these lines, they're converging somewhere way off the page. These are line to converging somewhere here. अब यहाँ पर जो मैंने सेशन में बोला था, आप अपने डिस्टेंस को, व्यूइंग डिस्टेंस को जितनी दूर रखोगे, या आप यहाँ ये बिल्डिंग, अब ये स्टैटिक है, आप इसको मूव नहीं कर सकते, दिस इज एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, राइट? सो बट दिस फोटो इज टेकन फ्रॉम अ डिस्टेंस वेयर यू कैन सी द होल व्यू ऑफ द बिल्डिंग प्लस द स्ट्रीट. तो जब ऐसा कोई आउटडोर आपको कुछ ड्रॉ करना है ना आपको, तो आपको ये आपको बस ध्यान रखना है. अगेन फिर से आई एम रीआइटरेटिंग द पॉइंट, द वैनिशिंग पॉइंट्स आर वे ऑफ दिस फ्रेम, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी दिस whole view of this building. That's the reason. That's the reason. Now here, if you can guess where is the horizon line, if you can guess where the horizon line, so it is somewhere here. So this is the horizon line here. You can look at all the cues here. You see, this is vanishing to here. ये सब उधर ही वैनिश कर रहा है, ये भी उधर ही वैनिश कर रहा है यहाँ पर. तो आपका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ जस्ट इस फ्रेम के बाहर है, और यहाँ पर भी कहीं यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, बिकॉज ये ज़्यादा डिस्टेंस में है. सॉरी, is here. The second vanishing point is that this is drawn in 2-point perspective. Okay, and so again interior, again this is in 2-point perspective, and here is your vanishing point here. This is view of a restaurant or some like a fast food restaurant. ये आपका horizon line है. ठीक है, बस आपको वैनिशिंग पॉइंट कैसे प्लेस करना है, हॉराइजन लाइन कहाँ रखना है, उस पर डिपेंड करता है वो चीज़ पे. ठीक है, और यहाँ पर गौर करने वाली क्या चीज़ है, जो चीज़ें हॉराइजन लाइन के नीचे है, यानी आपके आई लेवल के नीचे है, तो आपको उसके यहाँ पर उसका टॉप सरफेस दिख रहा है. जैसे टेबल का टॉप सरफेस दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जस्ट अबव हॉराइजन लाइन है, या जस्ट एट हॉराइजन लाइन है, इसलिए हमें वो नहीं दिख रहा. ठीक है, एंड so we look at some example. Now this is an example of 3-point perspective. So you see here, now if you can make out, so where is the viewer standing here? Viewer कहाँ कहाँ खड़ा होकर उसने फोटो लिया होगा उसने, वो बेसिकली जस्ट ये कॉर्नर उसके जस्ट यहाँ खड़ा है जहाँ से उसने फोटो लिया है. ओके, एंड this is in 3-point perspective because there's a third vanishing point somewhere here. So these lines, अगर इस corner edge को देखेंगे, so they are all vanishing towards that vanishing point here. So they are all vanishing, converging towards this vanishing point here. So these lines. Okay. And तो horizon line जो है आपका, यहाँ पर है horizon line. यहाँ horizon line आपका. Okay, so in this case, our horizon line is below our eye level. Okay, because we are looking up. हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं. So we are looking up. So that's why this is, like a ant's eye view. इसको हम ant's eye view बोल सकते हैं इसको. So if you're looking something up, this is most probably we draw. And whenever students draw in 3-point perspective, they always draw like this. They converge like this. Now this convergence, why this convergence is again happening? Because we are very, very close to the object. हम horizon line के बहुत नजदीक है. ये horizon line है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं ये फोटो ले रहा हूँ तो उस वजह से कन्वर्जेंस हो रहा है. अब जितना मैं इसके पीछे जाऊंगा, ये और स्ट्रेट होता जाएगा, एक टाइम स्ट्रेट होता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा. और अगर मैं और दूर होऊंगा, एक पॉइंट पे ये जो लाइंस हैं, सो जस्ट लेट मी क्लियर, दे विल एग्जैक्टली लुक लाइक क्यूबॉइड लगेगा. ऐसे लाइंस आएंगी, स्ट्रेट लगेंगे, कन्वर्ज ही नहीं होंगे, वो ऐसा फ्लैट लगेगा. अगेन जो मैंने शार्पनर का एग्जांपल दिया था, मूविंग अवे और मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, सो दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स द पर्सपेक्टिव. ओके,
and we'll see some more. Okay, now you see here the difference between this. Let me go back to this. अब इसमें difference क्या है? अब यहाँ viewer जो है थोड़ा और दूर हो गया और पीछे हो गया. So you see this line, they're not converging as much as it was converging in previous drawing. हल्का सा converge हो रहा है. Okay? और in fact, और यहाँ पर भी जो आपका जो horizon line जो है वो भी यहाँ पर है. So they are converging way into the distance, way into the distance. Way, in fact, it is going beyond the screen. Okay, so they are way converging way toward into the distance. Even this Windows line also, even this, they're converging way into the distance. This, or even all the side buildings, everything, sub converge kar raha hai. So you need to understand this. Okay, so how these things work. So this is very, very important. Okay. Okay, so and we see now this is a very extreme perspective. Now we are almost looking straight. So we're looking almost straight. ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, looking at the sky. Again, this is a 3-point perspective. This again 3-point perspective. Because you see these lines converging to the third vanishing point. These lines, edges, they are all converging to the third vanishing point here. Okay, here and here and here. Okay. But here we don't see the base of the building because our head is almost like a 90-degree towards the sky. That is why. So here our horizon line is below our feet. Our horizon line is below our feet. Okay. So this is what is happening. So this is very an extreme example of 3-point perspective. Okay, so okay, sorry. So this is something like that. Okay. So I hope you understood the perspective, how it affects in real life also. Okay. And so this is something that like what you see here. And I hope you understood that how does it affect the perspective and how does it like helps you in like drawing kind of thing. Okay. So this is very, very important. So I hope you understood how perspective works. तो आज मैंने सेशन में आपको जो बताया है वो यही चीज बताया कि एक किस तरह से हम पर्सपेक्टिव को वी कैन प्ले अराउंड विद द पर्सपेक्टिव एंड how we can use that into a drawing. So I show you the examples of an interior drawing and also an exterior drawing. So how you see, मैंने annotate करके बताया कैसे वो perspective को even though those are photographs, but remember even in photography also, if you ask any professional photographers, they need to know the understanding how perspective works. तभी वो dynamic picture or dynamic composition they can capture. If they don't understand how perspective works, how illusion of depth and space works, they'll never able to capture that image, any object in its true proportion or in its natural viewing. Okay, so its perspective is not something which only applies to photography or applies to drawing, but it applies to everything. And whatever we see in 3D or what we see around us, that is what we need to memorize. तो आप मैंने पिछले सेशंस में मैंने कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू ड्रॉ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. तो जब आप ऑब्जर्वेशन सब ड्रॉ कर रहे हो तो जैसे मैंने इमेज में आपको एनोटेट करके बताया कैसे पर्सपेक्टिव लाइंस कन्वर्ज कर रही हैं, कहाँ पर हॉराइजन लाइन कहाँ पर है, कौन सी चीज फोरशॉर्टन हो रही है, कौन सी चीज बड़ी दिख रही है, ऑब्जेक्ट कितने दूर या कितने नजदीक है व्यूअर के. ये चीज आप जब ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करोगे ना तो ये चीज आपको ध्यान देना है. If you can understand that while drawing from observation and you can memorize into your brain, okay, while we're drawing, this is something we need to keep in mind, then you'll very easily draw when you draw from memory.
Okay, so this was the basic concept I wanted to explain in today's session. एंड ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो आज सीखा है, जो मैंने बताया है, इसको हम आने वाले सेशंस में एक्चुअल ड्राइंग हम जब करेंगे, उस ड्राइंग में उसको मैं डेमो करके बताऊंगा कि कैसे वो ड्राइंग, आज के कॉन्सेप्ट्स को हम ड्राइंग में अप्लाई करते हैं और कैसे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम कैसे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट टुडे. And if you have any questions, if you have any doubts, you can write it in the chat box, and I'll try to answer them as much as I can. So if you have any questions, please do write it into the chat box, and I'll try to answer them. And in the meanwhile, when I'm waiting for some questions, so what is your task for this week? So your task for this week is that, so the concept which I explained today, so you need to take some reference photos. It could be of indoors or outdoors. And you just need to observe the concept which I explained today. Can you figure it out in that drawing or not? Or in that image or not? Okay. If you can figure it out, the concept which I explained in today's session, then you just try to draw it, you can draw it from observation. Just practice in your page, drawing करके आप practice करो कि एक real life image को कैसे अब yes, Sneha, I'll just come back to human figure drawing. Don't worry, I'll explain to it. When you're drawing, you just try to replicate the concept which I told you. Try to figure it out on your own in that drawing, and just try to draw it. Don't worry if it doesn't come out correctly or not. It doesn't matter. The important thing is that you just understanding the concept clearly as possible, because that is very important. That it is very, very important to understand the concept that will help you to draw anything which you wish to draw. Okay, be it human figures. So see, someone has asked that question that, okay, so how do we draw human figures? So human figures kind of thing is something, it's a very complex form. You understand that so that the concept is of drawing human figures. You first need to understand that, okay, that is a bit advanced concept, because especially if you're drawing in 3-point perspective human figures, the main problem that comes while drawing human figures, especially like suppose if you have a question that कि अगर कोई एक बंदा है जो अपना सेल्फी ले रहा है, वो सेल्फी ले रहा है और वो टॉप व्यू से एक सेल्फी ले रहा है, अब उसमें ऑब्वियसली वो एक एरियल व्यू हो जाता है. अब वो जब एरियल व्यू हो जाता है तो उसमें जो ह्यूमन फिगर है उसका जो प्रोपोर्शन मीनिंग दैट उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी. अब ये हमें विजुलाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि वो कितना कंप्रेशन हो रहा है. Now, in order to figure out how much that person is compressing, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया पर्सपेक्टिव का, वो सीखना बहुत जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट ड्राइंग ह्यूमन फिगर्स इन पर्सपेक्टिव. Because if you don't understand how perspective works, irrespective of whatever you draw in perspective, you'll always struggle to figure it out. Okay, what would be the proportions of that particular topic or subject matter if I'm drawing in perspective? Okay, so that is something which you need to understand. So don't worry about the proportions or how to draw human figures in perspective. So that will come if once you understand perspective. And don't worry, in future sessions, I'll teach you how to draw proportions, including human figures in perspective. Okay, so don't worry about that. आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा कैसे हम इन ह्यूमन फिगर्स को पर्सपेक्टिव में हम कैसे ड्रॉ करते हैं while keeping the proportions correct, irrespective of in whichever perspective we are drawing here. Okay, so I hope you learned some concept in today's session, and thanks for joining. And
I'll see you next session, and we'll get to know the topic of next sessions. Before we actually start drawing in proportions in perspective, there are a few more topics I would like to cover. जब वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तब हम एक्चुअली हम ड्राइंग्स करना शुरू करेंगे, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो आने वाले सेशन में, 1-2 सेशन में शायद और लगेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो सब हम अप्लाई करेंगे एक्चुअल ड्राइंग में। तब आप उसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उस ड्राइंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेशन में मैंने कहा था, इट्स क्लियरली सेड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट ड्राइंग. It is very easy for me to draw something which is something okay without explaining the concept in detail. I can do demo of drawing of which I showed in my first session also. मैं वैसे ड्राइंग करके आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया, कैसे बनाया, क्या मेरा अप्रोच था। तो इन सेशंस का ऑब्जेक्ट ये कि आप वो अप्रोच को सीखो, rather than learning how to draw something. It is better to learn how to learn how to use that approach of drawing. आप अप्रोच और प्रोसेस को आप सब समझ जाओगे ना, आप कुछ भी अपने आप से ड्रॉ कर सकते हो वो चीज को। ओके, so that's it for today's session, guys. Thank you very much for joining. I hope you enjoyed today's session, and hoping to see you soon in next session. Have a nice evening and take care.